as far as Calcutta High Court is concerned, Calcutta High Court said that जैसे बोला गया है कि this delay beyond 4 months cannot be condoned. At the same time, the statute does not say that the said date the appellate authority cannot, क्योंकि ऐसे express words नहीं है कि sufficient cause दिखाने के बावजूद भी delay beyond 4 months cannot be condoned, ऐसे words नहीं है, and that is why that delay can be condoned. ये कलकत्ता हाई कोर्ट का view है. Now, as far as Bombay High Court is concerned, I am sorry to put before you on this issue. Bombay High Court has taken a stand on the basis of earlier Supreme Court judgment, which I have put before you. In this case, Meritas Hotels. So, Bombay High Court also is saying that we cannot overlook the object behind a particular provision, and by relying on the judgment of GlaxoSmith in Meritas, the Bombay High Court has dismissed that writ petition on this count, that delay beyond 4 months, we have no power to condone. That's why that delay was dismissed. Now, this is another judgment of the Bombay High Court, Aurangabad bench. Of course, this issue was the appeal against the cancellation order of cancelling the GST registration certificate. In this case, Aurangabad bench of the High Court, Bombay High Court, took a stand that to do business is a fundamental right, and looking to Article 19(1)(g) and Article 21, which gives the right of livelihood, that is Article 21. So this is when the registration certificate is cancelled, means you have violated the fundamental right of the petitioner, and that is on that count. You can see this bullet. The High Court set aside the cancellation order under GST, whereby the GST registration certificate was cancelled, and that petition was allowed. But this again cannot be taken as a general rule, as a case law, and apply to each and every case. That is why this battle could be a great one. Before I go to the another topic, that is when to file, one has to decide when to file an appeal and when to file a writ petition. I think this platform should be made open for some time for the live queries from the participants, and then we will proceed further for the writ petition issue. Under which circumstances writ petition should be filed. I request the admins or the host to make this open for all of them. So either they will raise the hands, or we can go in the chat box and we'll proceed. Stop share. Stop. Stop share. Okay. यार गर्ग में जा रहे थे. Mr. B.R. Garg has raised his hand. Garg ji, please proceed. How are you, sir? हाँ बस very fine. कैसे आप? बस ऊपर वाले का बहुत मेहरबानी. बोलिए सर. I just wanted to emphasize upon 146. About 146. Okay. The word used therein is such. Huh. So the word such will qualify only the things mentioned in the section itself. Correct. Even if they issue a notification, as you have opined, they can inherit the power of putting service into it. 169 cannot be put into 146, as I understand it. Yes, that's why I said, on this count, if we challenge, then that will not be treated as a legal way of serving the order, and we may succeed. That is true. The word "or" is you have to use serial number 1 or
When you have exhausted serial number 1, then you have to use serial number 2, and Correct. that is in that serial only. Yes, correct. You cannot just put the order into the portal and then presume that it is served. And 146 definitely support our contention. That is what my submission is. Yes, yes, that's correct. Right. If anything, you may add. Yes, correct. That's all. Thank Yes, you. thank you. Thank you. Thank you. Chatbox मध्ये ते घ्यायचे का नंतर घ्यायचे? Hello. Hello. Mr. Amit Jain wants to ask a question. Amit Jain. Mr. Amit Jain. Mr. Amit Jain. It seems he is not unmuting himself. Mr. Rajesh. He has raised the hand earlier. First, remove this sharing your screen. Then it will be better. You remove sharing screen. When the sharing screen will be stopped, things will be better. Your voice is not clear, sir. अच्छा, एनीवे लेकिन सबको अनम्यूट किया है क्या? सबको अनम्यूट किया गया है? करायला पाहिजे ना, कोण करेल? म्यूट ऑल आहे ना म्हणतोय आपण, हे काय म्यूट ऑल का नको? Mr. Rajesh. Can we? Everybody is unmute now. Yes. Can I ask a question? Yes, yes, sure. Yes. सर नमस्कार, मैं गुलाब अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा हूँ भिवाड़ी राजस्थान से। अच्छा, वेलकम। बेसिकली क्या होता है सर, जो इसमें कभी सर्च और होता है तो वो जनरली डिपार्टमेंट कोई इनपुट मिस तो होता है, वो कई बार होता है कि आपके फर्म बैकडेट से कैंसिल है। आप जरा जोर से बोलेंगे, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है। डिपार्टमेंट समटाइम ड्यूरिंग दी सर्च और सर्वे कुछ एडवांस पेमेंट जमा करा लेते हैं इनपुट के हेड में या कैश के हेड में। समटाइम्स ये मानते हुए कि आपका जो ये इनपुट है ये अनएलिजिबल था, जो आपने क्रेडिट ले लिया, जो आपका सप्लायर है वो मान लीजिए कि फेक है या किसी भी कारण से जो शोकॉज बना देते हैं। लेकिन जब हम अपील फाइल करते हैं तो जो एडवांस पेमेंट जमा हो जाते हैं DRC 3 के थ्रू, वो उसमें एडजस्ट नहीं होता APL 01 में। तो हमें डबल पैसे जमा कराने पड़ते हैं, क्योंकि जो DC अपील या कमिश्नर अपील ऑफिस है वो बोलते हैं कि ऑनलाइन अपील ही अलाउड है, ऑफलाइन अलाउड नहीं है। और ऑनलाइन APL 01 फॉर्म में वो अमाउंट एडजस्ट नहीं होता, तो आदमी को समटाइम डबल पैसे जमा कराने में 10% तो ऑफलाइन का कराना पड़ता है, जो एडवांस जमा हो जाता है ज्यादा हो जाता है। तो इसका कोई सोल्यूशन होता है सर? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसे इशू में, जैसे मैंने एक केस बताया, जो मैं चाहा DRC 3 का एग्जांपल मैंने दिया था सर, कि पहले ही ज्यादा पैसा भर चुके हैं जो हमने डिस्प्यूट किया है, तो और 10% पेमेंट क्यों करे। तो रिसेंटली जब मेरे सामने बॉम्बे हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर डिक्टेट किया, तो यही इशू पिटिशनर की तरफ से हमने रेज किया था
तो जी हाईकोर्ट ने ये बोला कि इन सच केस ए फिजिकल अपील मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटीज। सर। हाँ, तो ऐसे समय जब ये इशू आता है तो हमें ये काम करना है कि ये अपील अगर वो फिजिकली लेते नहीं है, जो जनरली लेंगे ही नहीं, इन दैट केस first of all you file the appeal to the principal commissioner and send it by email, by registered post and everything to create that background. Otherwise ये 10% जो भी amount ज्यादा है वो excess जाएगा. One must fight for it. I know कि in short one kind of adamancy from their side है, तो इसीलिए we have to fight by sending appeal physically. Mr. Rajesh. Yeah, you can speak, Mr. Rajesh. unmute नाही केलेलं आहे. राजेशने unmute केलं. वरती सर्व हात केलेलं आहे. Open केलं. हाँ राजेश जी. बोलता येत नाही बहुतेक. पुढे जाऊया शेअर करून ये इकडे. नको. नको. हाँ, तो इन शॉर्ट ये जो डिफिकल्टीज है, तो बेसिकली जो एज फार एज लॉ पॉइंट इज कंसर्न, हाउ इट इज डिफिकल्ट टू चैलेंज अबाउट दिस ये 4 months का जो प्रोविजन है, तो इसके देर आर मेनी इश्यूज अंडर द जीएसटी एक्ट जहां अल्टीमेटली यही पॉसिबल है कि रिप्रेजेंटेशन टू अमेंड दैट सेक्शन 107 into bracket 4 सबसेक्शन 4, तो कोई इश्यू जो अमेंडमेंट से सॉल्व हो सकते हैं उसमें ये एक इशू है. तो वन मस्ट द एसोसिएशंस लाइक अस must try for this about the service issue, and 4 months beyond delay cannot be condoned. Now the important part is जब हमें डिसीजन लेना है वेदर टू फाइल द अपील और रीट पिटिशन, तो यहाँ ये जो कमर्शियल स्टील्स लिमिटेड के बारे में केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया था, वो ये स्टैंड लिया था कि कोई भी रीट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट ने एडमिट करने से पहले, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट इज नॉट डिनाइंग टू एडमिट अ रीट पिटिशन और नॉट, दैट इज इट्स सोल डिस्क्रेशन ऑफ द हाई कोर्ट. फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल स्टील्स में ये 4 गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि व्हेन अ रीट पिटिशन कैन बी एंटरटेन्ड. फर्स्ट इज इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट. अभी अपील फाइल नहीं कर सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये स्टैंड हम नहीं ले सकते. ए वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यस, कि जहां बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैव बीन वायोलेटेड, तो यहाँ ये रिट पिटिशन एंटरटेन होना चाहिए. आगे एन एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कि जहां टैक्स लगाना ही नहीं चाहिए वहां टैक्स लगा,